during the process of healing. So if you are carrying the salt, just keep it in your pocket or keep somewhere near your body, please. So that during my healings, personal healing, I want to touch your hands. Just listen. Keep the salt in the pocket or keep on your lap, on your lap, on your lap. Don't keep in the hands because you are going to receive cosmic energies from your hand. Okay? Close your hands, close your eyes, sorry. Open hands on your leg, close your eyes, concentrate on your third eye. Take a deep breath in. Take a deep breath in, release from your mouth. Inhale and exhale from your mouth. Just take a deep breath in. Just when you are breathing, it should be from your root chakra to your crown chakra. Take a deep breath in and just release from your mouth. Take a deep breath in, just release from your mouth. Take a deep breath from your root chakra and release it from your mouth. As you continuously take deep breath, you'll feel drowsiness in your Sahasrara chakra. When you take a deep breath, visualize your breathing from your root chakra, that is the spine, and when you release out, when it's coming out from your mouth, you should feel a coldness behind your throat. Just take 1, 2, 3, start. Close your eyes. Concentrate on your third eye. Close your eyes. Concentrate on your third eye. Relax your mind, soul, and body. Just relax. Now stop breathing. Just follow my instructions. Concentrate on your third eye. Now, from your आपकी बंद आंखों से आपको अपने दोनों भुवों के बीच में देखना है. That is, close your eyes and just look into the third eye. Now, as the eyes are closed, looking into the third eye, you can see the darkness of the third eye. You're visualizing a darkness of your third eye. You're visualizing the darkness of the third eye. अगर आपने स्पेक्स पहने हैं, अगर आपने क्लिप लगाया है, just remove it. Now, as you go into the darkness of the third eye, आपको आपके आंखों के थर्ड आई के पास आपको अंधेरा दिख रहा है और just visualize you are traveling into the darkness of the third eye. You are traveling into the darkness of the third eye.
Now, as you move into the darkness of the third eye, just go run into the darkness of the third eye. You you totally feel heaviness on your eyes. Your eyes are stuck and closed. Your eyes are going on heavier and heavier, heavier and heavier. आपको बहुत heavy लग रहा है आपकी आंखों में? Just close your eyes, relax. Now, visualize, concentrate on your Sahastra Chakra. Sahastra Chakra मतलब अपने सर के ऊपर का हिस्सा, सर के ऊपर का हिस्सा. So now just concentrate on your Sahastra Chakra. Feel your Sahastra Chakra is totally relaxed. All the veins, brain, the area, feel it positive. Delete. When you're concentrating on the Sahastra Chakra, आपकी बंद आंखों से आपका पूरा ध्यान सहस्त्र चक्र के ऊपर जाना चाहिए. पूरा ध्यान आपको सहस्त्र चक्र पे केंद्रित करना है. जब आप सहस्त्र चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हो, सडनली यू सी अ व्हाइट लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स फॉलिंग ऑन द सहस्त्र चक्र. आपको लगेगा एक ब्राइट व्हाइट लाइट, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके सहस्त्र चक्र पे आ गई, एकदम ब्राइट, जैसे ना हेलोजन लाइट का व्हाइट कलर रहता है ना, वैसे. विजुअलाइज इट on your Sahastra Chakra. It is a now the light is entering into the Sahastra Chakra. Bright पूरा आपको दिख रहा है, और the black energies, negative energies, आजू बाजू जो भी आपके हेल्थ इश्यूज है, ब्रेन के, आपके सर दर्द हो रहा है, आपको माइग्रेन हो रहा है, आपका बीपी हाई होता है, वो सब नेगेटिव एनर्जीज, आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, whatever you're carrying on the area of the Sahastra Chakra, that is been deleted and it's entering downwards. It's moving downwards और ऊपर से व्हाइट लाइट से पूरा सहस्त्र चक्र एक्टिवेट हो गया. फील इट, विजुअलाइज इट. एक एक कण नेगेटिव एनर्जीज के, एक एक ब्लॉकेजेस आपके सहस्त्र चक्र के नीचे जा रहे हैं, और ऊपर से व्हाइट लाइट से उसको प्रोटेक्ट और कवर और एक्टिवेट किया जा रहा है. जस्ट फील इट, जस्ट फील इट, जस्ट विजुअलाइज. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड आई. अभी हमने क्या किया? सहस्त्र चक्र को क्लीन किया, एक्टिवेट किया. सब नेगेटिव एनर्जी, सब नेगेटिव वाइब्स, सब नेगेटिव things that was सब negative health issues of your Sahastra Chakra आ गए थर्ड आई पे. Now we are pushing it down towards the throat chakra, cleaning the third eye and filling the white light from the Sahasra Chakra entering into the third eye. All the area of the third eye is been clean and filled with white light energy, that is cosmic energy. So ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपने अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर दिया है. थर्ड आई को एक्टिवेट कैसे किया है? व्हाइट लाइट एनर्जी को स्प्रेड करके. वहां विजुअलाइज इट, योर थर्ड आई एरिया. योर अभी जब आप विजुअलाइज करते हो थर्ड आई को, जस्ट फील दैट ऑल योर issues of your eyes, of your brain, of your nose, जो भी आपको हेल्थ इश्यूज भी है, वो सब डिलीट होते हुए नीचे जा रहे हैं, और पूरा एरिया सहस्त्र चक्र एंड थर्ड आई इज फिल्ड विथ कॉस्मिक एनर्जीज. सब ब्रह्मांड की ऊर्जा से कवर हो गए हैं, एंड इट इज फिल्ड एंड इट्स यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव. नाउ मूव टुवर्ड्स योर थ्रोट चक्र. नाउ थ्रोट के पास आपका ध्यान केंद्रित कीजिए. जैसे आप थ्रोट चक्र के पास आपका ध्यान केंद्रित करते हो, आपको फील होता है आपका suppression, all the negative energies, all the blockages,
of your throat chakra, thyroid. अगर किसी को thyroid है, visualize that it is been deleted and moving downwards. And now from the sahasrara and third eye, the cosmic energies deleting all the negative energies of your throat chakra is spreading into the throat chakra. अभी जैसे थ्रोट चक्र के पास स्प्रेड हो रहा है वैसे ही वो शोल्डर पे जा रहा है, सब वेन्स पे जा रहा है. Now from shoulders it is entering into our hands. Feel the energies passing through your shoulder into your hands also. Cleaning the throat chakra. Throat chakra एक्टिवेट हो गया है सहस्त्र चक्र से, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा एंटर हुई है. सहस्त्र, थर्ड आई, नाउ थ्रोट चक्र. पूरा थ्रोट चक्र कॉस्मिक एनर्जी जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक्टिवेट हो चुकी है एंड यू आर फीलिंग वेरी मच पॉजिटिव ऑन योर थ्रोट चक्र. ये बंद कर, फिर चालू कर. बंद बंद. Now activating your sastra chakra, your throat chakra and your third eye. Activating the sastra chakra, third eye and throat chakra. Feeling very positive now. Feel all the energies around the sastra, third eye and throat chakra. Feel and visualize it moving towards your heart chakra. Now heart chakra. जो भी इश्यूज आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेके हैं, हार्ट इश्यूज है, थायराइड है, जो भी लंग्स इश्यूज, जैसे ही हम हार्ट चक्र को एक्टिवेट कर देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को पास आउट कर देते हैं, you will feel you are being healed with all these issues in your life. Now feel all the black energies, all the negative energies, all the negative issues of your heart chakra is been deleted and pushed downwards, and feel the heart chakra spreading the cosmic energies around the heart chakra. Feel the cosmic energy entering into your heart chakra and spreading all over the heart chakra. Just delete जो भी आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज है, feel it, visualize it, it is being deleted and pushed downwards, and it is being healed with green, white and golden color. Fill your heart chakra with green, white, golden color. Feel it, feel the energy of the cosmic. So filling and activating your heart chakra, just move downwards towards the Manipur chakra, that is solar plexus. Now जैसे आप सोलर प्लेक्सस के चक्र पे आपका ध्यान केंद्रित करते हो, you see the blockages of money, blockages of your power. हमारे माइंड सोल बॉडी की जो भी पावर है, वो ये चक्र को एक्टिवेट करते ही वो पावर जागृत हो जाता है. Now feel all the blockages of money, power, confidence is been deleted and pushed downwards, pushed downwards, pushed downwards, and your full Manipur chakra is filled with cosmic energies.
Feel the cosmic energy from the Sastra Chakra, third eye, throat chakra, हार्ट चक्र, सभी चक्र पे पास होते हुए ये आपके सोलर प्लेक्सस दैट इज मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। फिल हो गया पूरे मणिपुर चक्र को, फिल करके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कर दिया है। Feel, visualize your Manipur chakra activated with yellow, white, and golden color. Bright yellow. You have to sit erect, don't move. Now moving towards the Sahasra chakra. As you move towards the Sahasra chakra, moving towards the from the solar plexus, moving towards the sacral. From the solar plexus, now we are moving towards the sacral chakra. Depression, stress, anxiety, fear factor, fear issues, anxiety, frustration, anger. Very important is depression. जो भी लोग हैं जिनका भी स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक्ड है, they will have this type of issues, that is depression, stress, anxiety, fear factor. You know, लाइफ में हर एक चीज का फियर उनमें बहुत स्ट्रांग रहता है। वो डर डर के जीते हैं लाइफ। डिप्रेशन, सैडनेस बहुत होता है इनकी लाइफ। दे डोंट एंजॉय द लाइफ, नो हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। सो heal your sacral, that is Swadhisthana, by deleting all the black energies that has been collected there, push it downwards and fill it with cosmic energies, and fill it with ब्रह्मांड की ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी। पूरी कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरे सैक्रल पे, सैक्रल मतलब नेवल के आधे इंच ऊपर होता है। तो उस सैक्रल को एक्टिवेट जब आप करते हो, you will feel all your stomach issues, gas issues, kidney issues been deleted. Downwards, push it downwards, all the issues of your stomach, lower abdomen. Fill it with cosmic energy, activate it, feel the energy that it is been activated. Your gut level is high now when it is activated, and you're feeling very positive. Now moving towards the root chakra. So all the negative energies from your Sahasra chakra, third eye, throat chakra, heart chakra, solar plexus, sacral, it has been collected into the root chakra now. Just take a full force and just push it downwards. With a deep breath, just push it downwards and feel and visualize the cosmic energies from upper chakra has been entering into the root chakra. The whole root chakra is been filled with cosmic energies. Feel it, visualize it. जब रूट चक्र एक्टिवेट होता है, आपके जीवन को फायर मिलता है, पुश बैक फायर टू लीड योर लाइफ। हेल्थ इश्यूज पूरे डिलीट हो जाते हैं। ईच एंड एवरी चक्र, ईच एंड एवरी area of your mind, soul and body is being healed. Always your root chakra should be activated. अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है तो आप समझ लेना कि आपको ब्लैक एनर्जीज बहुत इजीली अट्रैक्ट होंगे and you are into black energies.
दैट इज ब्लैक वाइब्रेशन एनर्जीज। कोई छोड़ भी सकता है, आपको अट्रैक्ट भी हो सकता है, या किसी ने आपको फील होता है यू आर ब्लॉक्ड, यू आर इनटू ब्लैक एनर्जीज, दैट इज ब्लैक मैजिक एनर्जीज। अगर कोई किसी को ब्लैक मैजिक करता भी है, सबसे पहली बात तो रूट चक्र पे इफेक्ट होता है, आपका स्टमक भी ब्लॉट होता है, रूट चक्र पे इफेक्ट होता है। रूट चक्र is the area where the fire of your life is been activated. So activate the root chakra. Push all the negative energies downwards and activate it by visualizing it filled with cosmic energies from the universe. Feel the red color, white color, and golden color around the root chakra. Feel it filled with cosmic energy. पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा ये रूट चक्र में आ गई है आपकी, एंड यू आर फीलिंग वेरी लाइट, यू आर फीलिंग वेरी यंग नाउ। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज pushed down from Sastra Chakra to Root Chakra is passing from your hips, your thighs, your knees, just pushed down towards your calf, your ankle, push it down towards your feet. Now, at this moment, visualize and feel all the blockages of your mind, soul, and body is being pushed and removed and pushed down towards the earth chakra. Feel it, all the black negative energies coming out of your feet and entering into the mother earth. Feel it. आपको विजुअलाइज करना है कि बहुत गंदा कुछ एनर्जी काला सा, visualize it from your mind, soul, body is being releasing down from your feet and entering into the mother earth. Just feel it, feel it, feel it. कंटिन्यूसली जा रहा है, जितना भी अभी ऊपर से नीचे तक आप आए हो ब्लैक एनर्जीज को ढकलते हुए या पुश करते हुए नीचे आए हो, now it is coming out of your feet and it's entering into the mother earth. Now all the whole body, mind, soul and body is filled with cosmic energy, और ये energy आपके veins, आपके cellular level, आपके each and every micro veins and microcellular level तक पहुंच गई है. Now as your body is filled with cosmic energies, it is coming out overflow होके वो सब spores में से बाहर आ रही है. Visualize it. And आपके कान के स्पोर्स से, आपके नाक के स्पोर्स से, आपके मुंह से, आपके छोटे छोटे सेल्स से बाहर आ रही, स्पोर्स से, स्किन स्पोर्स से बाहर आ रही है. एंड feel yourself in cosmic energy. Now when it comes out of your body, अब जैसे cosmic energy पूरी आपकी बॉडी से बाहर आ गई है, you're sitting in a ball of white light energy and feel your aura is being brightened. आपके ऑरा, आपके वलय को क्लीन कर रहा है. फील इट, फील इट एंड विजुअलाइज आपका पूरा वलय. क्यों? तो व्हेन योर ऑरा इज ब्राइट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट. आपके पूरे माइंड, सोल, बॉडी में जब कॉस्मिक एनर्जीज, ब्रह्मांड की ऊर्जा एक एक कण में जब बस जाती है, तब व्हाट यू थिंक यू क्रिएट. all the negative energies, negative situations, कोई भी हो, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, मैरिज इश्यूज, ब्लैक मैजिक इश्यूज, या जो भी चीजें वो मैल बर दूर भागती है कोई भी. सो
फीट से आपके नजदीक कोई नहीं आ सकता। आपका वलय, आपका ऑरा इतना ब्राइट। फील इट, फील इट, फील इट, फील इट। ऑल द हेल्थ इश्यूज बिन रिलीज्ड, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बिन रिलीज। आपके घर में जो भी कलह है, क्लेश है, वो रिलीज हो गया है। एवरीबडी इज हैप्पी। Visualize what all your problems have been solved and you're very happy. Now, suddenly you see when your body is white light body now, cosmic energy body, you can see a plane, पूरा प्लेन ऐसे दिखेगा जैसे गोल्डन कलर का लोटस हो। Feel, visualize a golden color lotus from the universe coming towards you. Feel it, feel it, feel it. It is been stopped on your head. Now this lotus is here only for you. सिर्फ आपके लिए ये लोटस आया है ब्रह्मांड से। ईशान, ईशान, upgrade now. So go sit in the lotus. आपके white light body को लेके आप वो लोटस में बैठते हो। Now this lotus is taken you high above into the universe, that is ब्रह्मांड। आपको ऊपर फ्लोट हो रहे हो आप लोटस के साथ। जैसे आप बैठ जाते हो लोटस में, लोटस आपको ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। It's crossing the planes, that is fifth plane. You are entering into the fifth plane. Planes होते हैं यूनिवर्स में। Now we are on the earth on the third plane. तो fourth plane, fifth plane, जब आप fifth plane पे आप खुद को पाते हो, यहाँ पे deep universe है। And when you're floating on the fifth plane, living all the clouds, birds behind you, seeing the beautiful nature, you are floating higher and higher, and now you have reached into the fifth plane. Suddenly you see, suddenly you see uh, 21 stairs, crystal stairs, where the lotus is stopped. You come out and just try to climb the stairs. Visualize and up. Start climbing the stairs. Sorry, just start climbing. As you step higher and higher, one by one, you're releasing again all जो भी छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जीज है आप रिलीज करते हुए, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, आपका अल्फा लेवल, आपका हायर एनर्जीज, हायर सेल्फ इज बीइंग activated. As you come on the 21st step, you see a big door. जैसे कोई राजवाड़े का डोर होता है ना, a big door. You just push with all your strength. That is a crystal door meant for you again. Just open it and try to enter. As you open the door, you feel bright cosmic energies again on you. Special blessings of the god, goddesses, angels, all your ancestors over there. As you enter, you can see everybody there. Take the blessings of the god, goddesses, all the ancestors. Just see everybody flowering you, blessing you, pampering you,
Just collect all the blessings, just collect all the love from the God, goddesses, your angels and guardians. Just feel yourself, visualize yourself in the cosmic room where everything is kept for you: health, wealth, money, your relations, your growth, your power, what you want in your life, your kids, your children's, your husband, your wife, your family, all your connections, all the positive energies, जो भी आपकी wishes है, you can see there. Just go and try to collect each and everything with you. Just collect the blessings, सब अपनी पूरा आप खुद में वो सब ले लो. Go and collect it. Just go on collecting it. Health, wealth, money, prosperity. As you are collecting, I'm just healing you. आपको पूरा हीलिंग होने तक कलेक्ट करना है, कलेक्ट करते जाना है. And suddenly you see a throne over there, and go and sit on the throne also. As you collect everything, sit on the crystal throne. I'm healing the online clients right now. Feel the vibrations. Hands should be open to sky. आप उल्टे हाथ नहीं रख सकते. अगर आप उल्टे हाथ रखा है तो आपको कोई एनर्जी फील नहीं होगी. Just feel the energies on your hands. Your hands are vibrating. Your hands are heavy. You feel the energies around you. Just collect your health, wealth, prosperity, money, your relations. Remove all the black energies that you are carrying from years and years. आपके जितने भी पीढ़ियों से आपके पास जो भी डीएनए आपको पास हुए नेगेटिव, जैसे किसी को डायबिटीज है, आगे वालों को डायबिटीज हेल्थ इश्यूज है, so you can release that also over there, and you just collect the health, just collect the wealth, just collect the money, just collect a proper relation. Be into the energies right now. Vision, camera off, ulta करो. Right now you see the healing done.
माझं म्यूट आहे का? म्यूट आहे का? सगळे दिसते. Now you have been healed online and offline. Just receive all the cosmic energies from your mind, soul, and body. Just receive what was there. Just collect everything, all the blessings of the God, goddesses. You're filled with cosmic energies now. Now, what all God, goddesses, take the blessings of them. And as you take the blessings of the God, goddesses, just say thank you, be gratitude. Just feel the happiness that you have received there. What you collected from the universe, just feel it. Feel the happiness on your face. You should feel अगर आपकी विशेष फुलफिल हुई है तो आपको क्या कैसा फील होगा. Just feel the energies. And smile on your face. आपकी सब मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती है. आपकी विशेष भी प्रेजेंट टेंस में फुलफिल हो गई है. You're very happy. Your gratitude towards the universe. आप बहुत खुश हो. आपका घर हरा भरा है. पूरा परिवार खुश है. आप खुश हो. आपकी wishes, all the health, wealth, prosperity सब आपको मिल गई है. You're very happy. You're feeling very happy. Feel the happiness on your face. Just feel it. Visualization is very important right now because you're filled with cosmic energy. What you visualize, you manifest and receive it.
चरू चरू कुठेस तू? चिवडा खाल्ला काय? Now, as you collect, say thank you to the god goddesses whom you met there. Say thank you to the universe, what you have received today, and just come out of the room. Just take all the blessings of the god goddess, take the happiness, fulfill your wishes. You're filled with happiness with your wishes. Your visualization is very important right now. Collect everything and come out of the room saying thank you, be gratitude. Come step by step downwards towards the plane that is golden lotus. Again say thank you, gratitude to the universe and sit on the golden lotus. Be back to your coming downwards, saying bye, farewell, sit on the lotus, moving downwards towards yourself, collecting all the happiness, health, wealth, prosperity, all your wishes, collecting everything. You're coming down towards yourself. As you come down, you're very happy. Happiness is on your face again. You have the visualization and feeling. Feeling is very important. And with that feeling and visualization, you are on your Swastika Chakra. The golden lotus is been stopped there. Come down with the whole prosperity, health, wealth, money, success of your life, and wishes of your life. Enter your body with everything, and you're very happy. You're very happy. From the deep of the inner soul, you're happy with everything. Okay, that's what you are very happy. That you are Now, by the count of 5 to 1, rub your hands, put on your eyes, and open your eyes. 5, not now. 5, 4, 3, 2, and 1. Rub your hands. Put on your eyes and open your eyes looking at your palm. Don't look at anybody else. Don't look at anybody else. अगर आपने किसी और को देखा तो आपकी ऊर्जा वहां पे चली जाएगी. Very clear. Look at your palm. And if you can't open your eyes, just close, keep it close. जिन्होंने डीप और थोरली किया है वो आंखें खोल भी नहीं पाएंगे. It will be difficult for them.